तो आज बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द चैप्टर। सॉलिड स्टेट में जो बड़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से सबसे पहला आपके पास टॉपिक कि आपको कहा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड वन इज कॉल्ड एमोरफस सॉलिड। तो what is this crystalline solid and what do you mean by this term amorphous solid? तो crystalline solid में आप क्या कहते हैं? Constituent particles are arranged in regular manner. They are also called true solids and they have long range of order. However, in amorphous solid, irregular arrangement, they are known as pseudo means false, pseudo solids, and they have short range of order. Okay. सो एग्ज़ाम्पल में अगर आप लेते हैं इसका तो यू कैन से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस एमोरफस इज योर ग्लास, रबर etc. तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये आपके एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज you can say what do you mean by pseudo solids? Then you can say amorphous solids, तो they are called pseudo solids. और इसी में एक टर्म आता है आपके पास crystallate. What do you mean by this term crystallate? तो in amorphous solid there is a small region where particles are arranged in regular manner. So if they are arranged in regular manner in a small region, that small region in crystalline solids, in amorphous solid is known as crystallate. That is called crystallate. In amorphous solid there is a small region where constituent particles, when they are arranged in regular manner, that small region is called crystallate. So again an important term regarding your examination. Now the next one is called supercooled liquid. Supercooled liquid. What do you mean by this term supercooled liquid? Those amorphous solid which have a tendency to flow are known as, or we can say are called, super cooled liquid. Example, glass. And that question is very common, very important one regarding this glass B. Why glass B considered as super cooled liquid? And number of questions we asked regarding this topic, like in ancient sample of building, window जो आपके पास glass panes हैं, they are thicker at the bottom. Why? Because glass is a tendency to flow, so that will be thicker at the bottom, because glass we take considered as super cooled liquid. So that is again an important question regarding your examination. ठीक है. इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि सम टाइम जो आपके पास ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं दे अपीयर्स एज मिल्की. वाई? तो एज वी नो ग्लास बी एन amorphous solid. So during the temperature change during day and night, there is a small region where constituent particles are arranged in ordered manner. So that ordered manner in amorphous region solid like glass is known as crystallate. And in that region you can say
color of the substances appears as milky. So you can ask or you can write the answer of such type of problems. Okay, now the next point of this topic is your unit cell. But before going to this unit cell, first we will discuss about crystal lattice. What do you mean by this term crystal lattice? So for this, first we have to design a crystal lattice like this. This is called your arrangement. This is your x-axis, y and z, and in this called crystal lattice, we can say number of unit cells are present in this crystal lattice. So exactly what is this crystal lattice? So you can say regular three-dimensional arrangement of points. यहाँ पर ये जो हम पॉइंट वर्ड ले रहे हैं, पॉइंट मीन्स दे मे बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये डिपेंड करता है किस तरह ये क्रिस्टल है. सो वी आर यूजिंग अ कलेक्टिव वर्ड पॉइंट. तो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट in space is called crystal lattice or space lattice. तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, क्योंकि बिकॉज अगेन इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन टर्म, क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो आपने कहा रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस. तो इन दिस क्रिस्टल लैटिस जो हमने यहाँ पर दिखाया है, एक पोर्शन हम इसका शो कर रहे हैं. सो दैट वी कैन से दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर क्रिस्टल लैटिस. बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लैटिस के अंदर प्रेजेंट होंगे. लाइक यू हैव टू प्लेस मैच बॉक्स इन अ सिस्टम लाइक दिस. आप बहुत सारे मैच बॉक्स को ऐसे अरेंज कर लीजिए. तो यू कैन से दैट अ नेटवर्क टाइप अरेंजमेंट कम्स आउट. तो यू कैन एज्यूम दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क एंड वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस. तो इस तरीके का बहुत सारे अरेंजमेंट्स उसके अंदर फिट होंगे. तो हमने कहा क्रिस्टल लैटिस क्या, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड योर क्रिस्टल लैटिस. अब इसके अंदर बात आती है कि इस क्रिस्टल लैटिस में जो आपके पास हैं, जो बहुत सारे हमने अभी आपको बॉक्सेस कहा प्रेजेंट हो सकते हैं या अरेंजमेंट हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शो किए, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट सेल. ये हमारा नेक्स्ट टर्म आता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म यूनिट सेल? क्या होता है यूनिट सेल आपके पास? तो इट इज अ स्मॉलेस्ट बट complete repeating unit of crystal lattice. This is smallest but complete repeating unit of a crystal lattice is known as unit cell, and these are divided into two categories. दो तरीके का आपके पास है. One is called primitive unit cell and second one is called non primitive unit cell. And these primitive unit cells are also known as simple unit cell. तो अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा आपके पास, इन द सिंपल यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपने कहा इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. लाइक आपने कहा भी जैसे आपकी वॉल में बहुत सारे ब्रिक लगे हुए हैं, ईंटें लगे हुए हैं, तो जो सिंगल ब्रिक है दैट इज जस्ट यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल को आप रिपीट करते जाएंगे, देन यू विल गेट अ बिगर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ वॉल. सो दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस. सो वी कैन से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल. जो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिखाया है, basically this is the arrangement of your unit cell, or we can say it is a simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमने ये यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है. इसमें जो पार्टिकल्स आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन इज इन दिस सेल इज ओनली 1/8. 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है और रेस्ट बी शेयर्ड बाय द सराउंडिंग्स. ठीक है. सिमिलरली वी कैन से सेकेंड वन इज कॉल्ड योर
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट cells are further categorized into 3 ways. One is called body centered cubic unit cell, and second one is called face centered cubic unit cell, or we can also say third one is called end centered cubic unit cell. They all are called non-primitive. Non-primitive means in which constituent particles are arranged not only at the corner but some other position. Some other position like in BCC constituent particle. अगर हम figure out करें तो ये आपके पास BCC है और in this BCC arrangement constituent particles are present at the corner like this as well as within the center of the body. So this is called your body centered unit cell arrangement जो हमने ड्रॉ किया है. Similarly in face centered अगर हम बात करते हैं तो in face centered unit cell constituent particles are present at the corner like this. They are present at the corner as well as center of each face. 1 2 3 4. ये जो आपको फ्रंट वाला दिख रहा है ये वाला पोर्शन इसका सेंटर फेस का ये हो गया. देखिए जो बैक का आपको पोर्शन दिख रहा है इसका फेस का सेंटर ये हो गया. तो टोटल आपके पास दिख रहे हैं 8 तो कॉर्नर्स पर हैं और 6 आपके फेस सेंटर्स पर हैं. तो इसमें आपके पास 14 पोजीशंस दिख रही हैं. बॉडी सेंटर्ड में आपको 9 पोजीशंस शो हो रही हैं. 8 कॉर्नर पर हैं और एक आपके बॉडी के सेंटर पर है विद इन द बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक. एंड सिमिलरली वी कैन से इन एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड में हम कैसे इसको शो करेंगे. इन एंड सेंटर्ड मीन्स constituent particles are present at the corner as well as center of end faces. अपोजिट जो हैं 2 अपोजिट फेसेस दे आर नोन एज योर एंड फेसेस. लाइक हमने कहा एक यहाँ पर रखा है और एक ये यहाँ रखा है. सो इन दिस वे वी कैन से दीज ऑल आर कॉल्ड आर unit cells, primitive, non-primitive. So these are very important one. Okay, thank you for today's.